अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले बेल आइकन पे बटन दबा दें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हम आपको पोलिनेशन के बारे में बताना चाहते हैं। पोलिनेशन के 2 टाइप्स हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। अब हम क्रोम या गूगल में सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। Self pollination and cross pollination. Self pollination occurs when the pollen from the anther is deposited on the stigma of the same flower or another flower on the same plant. Cross pollination is the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of another flower on a different individual of the same species. What is cross pollinated with example? अब क्रॉस पोलिनेटेड के बारे में पढ़ा रहे हैं और उसके एग्जाम्पल बता रहे हैं। Cross pollination is a natural method in which transfer of pollen take place from an anther of a flower of one plant to the stigma of a flower of another plant of the same species. अब इसकी एग्जाम्पल्स है एमस्कुलेशन, इसका मतलब है रिमूविंग द मेल पार्ट्स। और इसके बाद है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस की एग्जाम्पल है द वूल ऑफ पी प्लांट विद जेनोटाइप। It is self-crossed or self-pollinated with pollen grain of the same plant that has the same genotype and same phenotype as the ovule. The result of this self-cross gives 3 tall plant with genotype, 1 dwarf plant with TT genotype. इसके बाद व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन डिफिनेशन बता रहे हैं। क्रॉस पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू द पिस्टल्स ऑफ अनदर फ्लावर। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन है पोलिनेशन अकर्स इन नेचर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स एंड वाइंड। दिस प्रोसेस कैन आल्सो बी डन बाय हैंड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड traits such as color or pest resistance. What are 2 सेल्फ पोलिनेशन एग्जाम्पल्स। सेल्फ पोलिनेशन की एग्जाम्पल बता रहे हैं। एक है पीनट्स, वीट, एप्रिकॉट्स, राइस, टमाटोज, इस तरह की सी। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन की एग्जाम्पल। सेल्फ पोलिनेशन एग्जाम्पल्स वीट, बार्ली, ओट्स, राइस, टमाटोज, पोटैटोज, एप्रिकॉट्स एंड पीचेस आर some examples of self-pollinating plants. What is the example of self-pollinated flower? Self-pollinated flower की example है अब ये। In this process, the pollen grain transfer from the stigma of the same or genetically similar flower. Self-pollination can be observed in legumes such as orchids, sunflowers, peas, peanuts, oats, peaches, potatoes, wheat, and others. What is the self-cross definition? अब self-cross definition बता रहे। self-pollination occurs when the pollen from the anther is deposited on the stigma of the same flower or another flower on the same plant. Cross-pollination is the transfer of pollen from the anther of one flower to the stigma of another flower on a different individual of the same species. What is hybrid cross with example? अब hybrid cross की example बता रहे हैं। As an example of dihybrid cross, if we choose the wrinkled green seed and round yellow seed and cross them in the F1 generation, they produce only round yellow seed, and in the F2 generation they will produce wrinkled yellow, round yellow, wrinkled green seeds and round green seeds, and the phenotypic ratio will be 9. इसके बाद what is the example of dihybrid cross? There are many examples of dihybrid cross. The cross between a tall pea plant bearing purple flowers with a dwarf pea plant bearing white flowers. Another example is characteristics of seed, round and yellow or wrinkled and greens. What is called self-pollination? Self-pollination is the transfer of the pollen grain from the anther of flower to the stigma of same flower in the same plant or to the different plant which is genetically similar is called self-pollination. ये self-pollination definition हो गई। What are the 3 difference between self-pollination and cross-pollination? अब हमें 3 difference बताते हैं self-pollination और cross-pollination के दरमियान। Both the stigma and the anther mature simultaneously in self-pollination. Both the stigma and the anther ripen at different times in cross-pollination. Pollinators are not required to transfer pollen grains. Pollinators are required for the transfer of pollen grains.
इसी तरह व्हाट इज़ द क्रॉस पोलिनेशन इन सिंपल वर्ड, क्रॉस पोलिनेशन को सिंपल वर्ड में क्या कहा जाता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ one plant to the stigma of another different plant is called cross pollination. What is the difference between self pollination and cross pollination? With example के साथ इसका डिफरेंस बयान करना है। इस तरह इन autogamy the pollen is transferred to the same anther to the stigma of the flower, while on the other hand in geotonomically the pollen is transferred to the stigma of another flower in the same plant. What is the pollination and its type? Self pollination. अब self pollination के बारे में सारा टॉपिक आ रहा है। There are two types of self pollination in autogamy. Pollen is transferred to the stigma of the same flower. In genetomically, pollen is transferred from the anther of one flower to the stigma of another flower on the same flowering plant, or from microsporangium to a ovule with a single gymnosperma. इस तरह ये सब इसके बारे में बता रहे हैं। सेल्फ पोलिनेशन की डायग्राम ये इसके बारे में सब एक्सप्लेनेशन है नीचे।